In an external magnetic field, comma, the spectral lines emitted by the atoms, the spectral lines emitted by the atoms the spectral line emitted by the atoms of a source arc source arc split into a number of polarized components full stop. The splitting is proportional to the splitting is proportional to strength of the field. This effect of magnetic field on the atomic spectral line is known as Zeeman effect. So here आ गोटे definition अच्छी लेख the splitting of energy levels of an atom in a constant external magnetic field is called Zeeman effect. So our energy level गुड़ा सोचे कौन नहीं कि energy level. So energy level टा ताको जदि आमे गोटे external magnetic field रे रखिबा ताहाले सेटा split करथिबो. Energy level तार गोटे थिला सेटा double हेजिबो, triplet हेजिबो, हला quadruple हेजिबो. माने सेटा divide हेजिबो. गोटे energy level टा divide हेकि double हेजे पारे, तीनटा हेजे पारे, चारटा हेजे पारे. So it external magnetic field presence रो हबो. So सही effect टा को आउची कोन Zeeman effect. बुझा भला पुराटा बुझे पे हला तमे गोटे लाइन रे जदि मन रखिबो तोडा मन रखिबो सेइटू स्टार्ट करले भी हबो. हां सेइडा सेई कथा लिखि गोटे जदि लाइट सोर्स को हमें जदि लाइट सोर्स टा कोन करती लाइन स्पेक्ट्रम दबो. स्पेक्ट्रम माने स्पेक्ट्रम रो एग्जांपल देले धरो लाइन टा पड़ जाए एटा धरो व्हाइट लाइट देखाउ छै ना. स्पेक्ट्रम माने हम जो प्रिजिम थ्रो रे देखो ना कि धरो विबगियर आछि हां विबगियर माने सातटा डिफरेंट कलर आछि तो सेटा वन टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम हला माने सेठी कोन होची ना गोटे लाइट सोर्स टा सेठी सातटा डिफरेंट कलर को स्प्लिट हे होची बा स्पेक्ट्रम सेटा को कहले कोन कहले स्पेक्ट्रम. जति एनर्जी लेवल रे गोटे स्पेक्ट्रम था तेणु ये कहला जे गोटे लाइट सोर्स जदि सेटा लाइट स्पेक्ट्रम पूरा प्रोड्यूस करथिबो माने एनर्जी लेवल्स प्रोड्यूस करथिबो ताहले ताको जदि हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रे रखिबा ताहले सेटा कोन होबो ना आगुरी स्प्लिटिंग हेतो माने क्लियर विजिबल स्पेक्ट्रम देखा जो धरो गोटे स्पेक्ट्रम अछि एमटी स्पेक्ट्रम जदि मैंने मैग्नेटिक फील्ड को ऊपर रखी तो गोटे मैग्नेटिक फील्ड नॉट सब कोन करती ताले कोन होबो ना ए स्पेक्ट्रम पूरा क्लियरली विजिबल स्पेक्ट्रम रे
ବୁଝିପାରିଲ ଧର ଏଇ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମଟା କ'ଣ ବ୍ଲକ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ମାନେ କ'ଣ ଏଟା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଅଛି ଯଦି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ରଖିବା ତାହେଲେ ସେଟା କ୍ଲିୟରଲି ଭିଜିବୁଲ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମରେ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇକି ଦେଖାଯିବ ମାନେ যেটা কাম করছে জুম করে দেখলা পরে এটা হচ্ছে জিমেন ইফেক্ট। জিমেন ইফেক্ট ভেরি ইজি ডেফিনেশন টা এনার্জি লেভেল পুরো এক্সটার্নাল ম্যাগনেটিক ফিল্ডে স্প্লিট করে লেখ सो जिमेन इफेक्ट अच्छी नॉर्मल जिमेन इफेक्ट भी गोटे अच्छी आ गोटे एनोलमस जिमेन इफेक्ट अच्छी टू टाइप्स ऑफ जिमेन इफेक्ट अच्छी गोटे हूँ नॉर्मल जिमेन इफेक्ट आ गोटे हूँ एनोमलस जिमेन इफेक्ट। सो आम फास्ट पॉइंट करवा वन नंबर वन बाई लिखिबार ए सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन ए सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन viewed at right angle a single spectral line viewed at right angle to magnetic field direction a single spectral line viewed at right angle to magnetic field direction is split split spelling ठीक लगता था SPLIT split into three plane polarized component components लिखो S लिखो components full stop the central unshifted line unshifted UNSHIFTED शिफ्ट करियो माने धर ये प्लेस शिफ्ट कला माने ये एठी बसची सेठी शिफ्ट करियो अनशिफ्टेड माने ये जेठी बसची सेठी हला द सेंट्रल अनशिफ्टेड लाइन with electric vector line 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 with बहिरे लाइन देछि सेठी LINE कर दबो line with electric vector vibrating parallel to magnetic field called TI component and other two components equally displaced on either side with electric vector perpendicular to magnetic field जो TI कंपोनेंट लिखना कि सेटा पाई होबे बहिरे भूल देछि एटा कोन लिखिलो इलेक्ट्रिक वेक्टर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड called sigma components
sigma components ଲାଗିଲା full stop. this is called this is a normal triplet, a normal triplet, and the effect is called normal Zeeman effect. Normal Zeeman effect. Full stop. Splitting of energy level exhibited by atoms. Splitting of energy level exhibited by atoms. Exhibited spelling lekha exhibted. Exhibited by atoms having spin 0 s equal to 0 is called normal Zeeman effect. Is called normal Zeeman effect. So it is one single spectral line ଅଛି এই spectral line ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ନା ତିନିଟା ପାର୍ଟ ରେ ହେଇଯିବ so এই ପାର୍ଟ ଟା କୋड କରିବ sigma unshifted line unshifted ମାନେ এই লাইনটা এমনি আসছে ABC সিধা যাচ্ছে unshifted তো এটাকে পাই কম্পোনেন্ট কোন করব পাই কম্পোনেন্ট have both sides are equally displaced become sigma component. One to sigma. So it has a normal triplet. Then one for the normal triplet. Right up for the normal Zeeman effect. So तुम्हें कहबो ए लाइन रे कोन এটা হলো স্পেকট্রাম এনার্জি লেভেল এটা হলো এনার্জি লেভেল সেই লেভেলটা তিনটা পার্টে ডিভাইড আছে unshifted line or both sides displaced line called the displaced line called sigma component और unshifted line called pi component बुझा गला बुझबा लगे नहीं डायग्राम टा करो सो इटा तुमर एग्जाम रे से व्हाट इज Zeeman effect हला तो लिखिबो डेफिनेशन टा लिखिबो तार दीटा पार्ट अछि गोटे होछि नॉर्मल Zeeman effect आ गोटे होछि anomalous Zeeman effect. So एबे सेकंड पॉइंट लेखो एटा नॉर्मल Zeeman effect जार स्पीड रहिबो एनर्जी लेवल शिफ्ट करथिबो हला नॉर्मल Zeeman effect कोन जार स्पीड रे रहिबो तीनटा लेवल को शिफ्ट करथिबो तार नॉर्मल ट्रिपलेट आस्थबो तन ताको नॉर्मल कोन कर दिबो नॉर्मल Zeeman effect. एबे देखिबो कोन है जो परपेंडिकुलर ना केटा एटा थ्री प्लेन पोलराइज्ड सुनो एटे साइड बा इनो हमर गुटे अनशिफ्टेड एटा डिस्प्ले सेटा होची प्लेन पोलराइज्ड कंपोनेंट मन रखिबो आ गुटे होची पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड पर एटा मैग्नेटिक फील्ड होची ताको जे पैरेलल वॉल्यूम पास अनशिफ्टेड सेटा पाई कंपोनेंट हला that e side को जोटा हला such a sigma component जोटा equally displaced कोन हेतु equally displaced. एबे देखियो हमें anomalous Zeeman effect कोन डाली हां से कहूची स्पेक्ट्रल लाइन टा राइट एंगल को रहिबो आ जो पाई कंपोनेंट टा सेटा होची पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड रहिबो बुझा बोलो सो हम एटा देखु एटा डायग्राम तते शो कराई तो मैग्नेटिक कंपोनेंट टा एमिति रहिबो जेटा कि स्पेक्ट्रल लाइन को राइट एंगल रे रहिबो
ଆଉ ପାଇ କମ୍पोନେଣ୍ଟଟା ତାକୁ ପାରାଲାଲି ଶୋ କରୁଥିବ। ଆମେ ଏଠି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡଟା ଆମେ ଶୋ କରିବୁ, ସେଇଟା ଲେଖିଛି ଦେଖ ଡେଫିନେସନ୍। ଏ ସିଙ୍ଗଲ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରାଲ ଲାଇନ୍ viewed at right angle to magnetic field. मैग्नेटा एमती प्लेस कर जेटा कि स्पेक्ट्रल लाइन को परपेंडिकुलर आउ एटा को से पैरेलल व्यू कर पाई के पैरेलल ना तो डेफिनेशन टा देखो हां माने ए मैग्नेटा डिस्प्लेस हम कर पारे ना स्पेक्ट्रल लाइन को एमती थिबो तो हटा सेठी किछि कर परिबो किंतु जेते इंस्ट्रूमेंट सजा हेथिबो जिमेन इफेक्ट पे सेठी एमती थिबो जे पाईटा को पैरेलल देखा होतो किंतु स्पेक्ट्रल लाइन को परपेंडिकुलर सेकंड पॉइंट लिखो एटा होची एनोमलस सीमेंट इफेक्ट रहबो देखो दी फाइव स्ट्रक्चर कंपोनेंट हेडिंग दरकार नहीं खाली सिंपल लिखो 2.2 कर एटा आई करतो जदी 2 आई करिवो एटा 1 करतो तो 2 कर 2 रे लिखो दी फाइव स्ट्रक्चर कंपोनेंट of a multiple spectral line the five structure component of a multiple spectral line comma however show a complex Zeeman pattern complex Zeeman pattern PTERN. For example, pattern for full stop there. For example, the sodium D1 and D2, the sodium for example, the sodium D1 and D2 टा होची capital D1 and D2 yellow doublet D1 and D2 yellow doublet 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 बोले DOUBLET doublet gives 4 and 6 lines respectively in Zeeman pattern full stop. It is called anomalous लिखबो ANOMOLOUS anomalous Zeeman effect. Full stop. The splitting of energy levels the splitting of energy levels exhibit by atoms having non-zero spin सेटा रे जीरो स्पिन थिला एडी नॉन जीरो स्पिन मन रखिबो
नॉन जीरो स्पिन ब्रैकेट में देखो एस इज नॉट इक्वल टू जीरो, इज नॉट इक्वल टू जीरो is called anomalous Zeeman effect. Anomalous Zeeman effect. Full stop. The Zeeman splitting is the Zeeman splitting is smaller than the Zeeman splitting is smaller than the fine structure splitting. The Zeeman splitting is smaller than the fine structure splitting. डायग्राम करिया एटी डायग्राम को आसो एटी देखो सॉरी रो तीन प्रकार लाइन वाला है तो D1 और D2 है जेडे की येलो कलर है कोन है येलो जन का को है D1 D2 येलो डबलेट माने 2 है D1 D2 और D1 और D2 रो कंपोनेंट केमि हो लाइन स्ट्रक्चर है सेटा आसमा होके आसो तबे से चारटा बारी केतना बना हो एटा अनशिफ्टेड करो सेटिंग कोन जे सेंटर लाइन अनशिफ्टेड ताकि एटा पार्ट को बाय कंपोनेंट आ आगे ये करछो 6 नंबर D1 आ गोटे कोन दिला 4 आ गोटे केते दिला 6 ताले सेटा आगा 6 का पार्ट रहलो तो एटा D2 का कैपिटल को एमिडियस को 6 का पार्ट तले लिखिदेव एनोमलस पैटर्न सो D1 टा चारटा स्प्लिटिंग हो फोर स्प्लिटिंग आउ कोन हो हमर D2 रो 6टा देखो द नॉर्मल Zeeman इफेक्ट D1 D2 कौन कहली परा सोडियम लैंप एडी सुन D1 D2 होची सोडियम लैंप गुटे थाए सोडियम लाइट जेते तुम्हारा लेजर थाए हीलियम लेजर हां नियॉन लेजर तो सोडियम लाइट भी कहता है सोडियम लाइट तुम तो एक्सपेरिमेंट होनी तारे डार्क रूम रे सोडियम एक्सपेरिमेंट करा जाए हला सेतरे कोन करा जाए गोटे लैंप थाए हला से लैंप रो गोटे सिंगल रे लाइट थाए सो सोडियम लैंप रो हला दीटा डबलेट थाए जेटा कि येलो कलर शो करे हला सेटा होची D1 गोटे ना आ गोटे होची D2 बुझि वाला नेट रो सर्च करतो सोडियम लैंप D1 D2 आराम से हला D1 D2 हला तुमरो डबलेट तार स्प्लिटिंग इज तार जदि हमें Zeeman इफेक्ट देखिबा D1 टा 4टा दबो आ D2 टा 6टा दबो बुझा पता हला तो एटा कोन है एटा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तक होची तेणु याको कह जाय एनोमलस Zeeman इफेक्ट हॉल इफेक्ट गुटे अछि हॉल इफेक्ट रो भी नॉर्मल हॉल इफेक्ट गुटे अछि एनोमलस हॉल इफेक्ट अछि एनोमलस जे यूज हेतो भाबी न होचे सेटा होचे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एनोमलस मींस कॉम्प्लेक्स बुझ पालो देखो द नॉर्मल Zeeman इफेक्ट the normal Zeeman effect is explained
normal Zeeman effect is explained using both classical and quantum theories. Using both classical and quantum theories, which anomalous Zeeman effect, which anomalous Zeeman effect cannot be explained using classical theory. Using classical theory माने क्लासिकल थ्योरी यूज करके एनामलस को हमें डिस्क्राइब कर परिया नहीं किंतु नॉर्मलटा क्लासिकल और क्वांटम बोथ रे एक्सप्लेनेशन देयो तमरो यार Zeeman effect लॉन्ग टाइप आछि कि शॉर्ट टाइप आछि लॉन्ग आछि ताले तार डेरिवेशन दरकार एडी Zeeman effect रो सेटअप अछि जो पचान नतला Zeeman effect रो सेटअप लॉन्ग टाइप रो डेरिवेशन टाइप अछि तुम क्वेश्चन टा करलो का लॉन्ग टाइप रो एटर बहुत एक्सप्लेन करिवो नॉर्मल आ एनामलस तार तुम्हार लॉन्ग टाइप केते पड़छि 6 मार्क ये तो 6-7 पेज अछि यदि टोटल डेरिवेशन करिवो 6-7 पेज एडी क्लासिकल एक्सप्लेनेशन टा अछि क्लासिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ Zeeman effect क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन ए तुम्हार क्लासिकल टा पड़छि ना क्वांटम टा पड़छि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आनिबो ना प्रैक्टिस करछ कि नहीं क्वेश्चन के कोन कर काली जो देइथिली करछ देखि ये गुण करछ आ के करछ भाई से लॉन्ग टाइप का तो करना करछ सर के करछ टिके हाथ देखिला जो देइथिले क्वेश्चन केवल गुण करछ आउ के करछ काली सेमिनार हम कही काली सेमिनार हो पूरा हौ सुन तुमर एटार Zeeman रो Zeeman रो क्लासिकल भी अच्छी क्वांटम भी अच्छी आम खाली क्वांटम टा कहीदेवा ना क्लासिकल टा भी कह दुईटा कह प्रैक्टिस कर तर खाली पचारा डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर आमर Zeeman effect पचारा ताले तुम जेटा कले हम क्वांटम टा छोट डेरिवेशन अच्छी क्लासिकल टा लेंथी डेरिवेशन ये क्वांटम टा कले हम बाकी दुईटा करदबा आ गोटे देती एनोमालस भी एक्सप्लेनेशन अच्छी एनोमालस एक्सप्लेनेशन लेंथी एक्सप्लेनेशन